Hello everyone. So today we are just discuss about the basic about the cardiovascular system. Okay. So cardiovascular system which include the heart and the blood vessels. Okay. So what is the function of heart? So heart is pump blood into the blood vessels. Heart क्या करेगा? Heart is pump the blood into the blood vessels, and the blood vessels circulate the blood throughout the body. एंड वाया द ब्लड वेसल्स जो भी हमारा ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा. सो द ब्लड वेसल्स सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. Then, what is heart? So, heart is a muscular organ that pumps blood throughout the circulatory system. The position of the heart is it is situated between two lungs in the mediastinum. So, in Viva, the question is asked, say, position of the heart. So, it is situated between two lungs in the mediastinum. It is made up of four chambers, that is, two atria and two ventricles. Let's see the septa of the heart. So what is septa? Okay, septa means general term में हम बात करें कि that function is separation. Okay, so right and left atria are separated from one another by a fibrous septum called as intra-atrial septum. मतलब कि two atria, one right side and one left side, तो वो दोनों जो separate हो गए किससे हो गया? So they are separate by the intra-atrial septum. Okay, so the septa between atria and right atria and left atria, that is separate from the intra-atrial septum. देन वेंट्रिकल्स की हम बात करें तो राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम. दो वेंट्रिकल के बीच में है ओके सेप्टा, सो इट इज नॉन एज इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम. Okay, so two septum, intra-atrial septum and intraventricular septum. The upper part of this septum is a membranous structure, or lower part of the septum it is a muscular in the nature. So this is about the septa of the heart. Now we see the layers of the heart. So in our heart we have three layers: outer one, मिडल वन एंड इनर वन. आउटर मतलब जो बाहर की साइड है वो, मिडल मतलब बीच में, और इनर मीन्स अंदर के साइड. सो आउटर लेयर नॉन एज द पेरिकार्डियम. ओके, मिडल, मिडल फॉर एम, सो मिडल इज मायोकार्डियम एंड इनर दैट इज एंडोकार्डियम. आउटर, मिडल एंड इनर. सो वी हैव थ्री लेयर्स ऑफ द हार्ट. नेक्स्ट वी सो अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट. ओके, तो सर्कुलेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी अबाउट द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. सो इन हार्ट वी हैव फोर चैम्बर्स. ओके, सो बेसिकली दिस इज जस्ट एज्यूम दिस इज अवर लेफ्ट हैंड. ओके, तो एंड दिस इज अवर राइट हैंड. सो जहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड है वहाँ हार्ट की होगी राइट साइड. ओके, सो दिस इज राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड हियर अवर राइट हैंड. So heart की होगी left side. Understand? So it is opposite to our hand. So right atrium, then left atrium, which is left side. Then right ventricle and left ventricle. Short form is RA, right atrium, LA, left atrium, RV, right ventricle, and LV, left ventricle. Okay, so this is about the four chambers of heart, and these are our lungs. Okay. नेक्स्ट व्हाट इज अबाउट दिस. ओके, ये क्या है? तो दिस इज आवर वाल्व. ओके, हार्ट में हमारे पास है दो वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व एंड अदर इज द सेमी ल्यूनर वाल्व. ओके, सो दिस आर एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल में बीच में है तो उसे हम बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व. So between right atrium and right ventricle we have one valve, that is tricuspid valve. Tricuspid valve. एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व है, उसे हम बोलेंगे बाइकस्पिड वाल्व, और अदर नेम ऑफ द बाइकस्पिड वाल्व इज माइट्रल वाल्व. सो दिस इज वाइवा क्वेश्चन. ओके, इंपॉर्टेंट के बाइकस्पिड वाल्व ऑल्सो नॉन एज, सो इट इज ऑल्सो नॉन एज द माइट्रल वाल्व विच इज बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. देन अनदर वाल्व दैट इज सेमील्यूनर वाल्व. तो सेमील्यूनर वाल्व यहाँ पे और यहाँ पे हो गए. ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे पल्मोनरी वाल्व. ओके, यहाँ एक पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लंग्स में लेके जाएगी तो उसे हम बोलेंगे पल्मोनरी वाल्व. एंड हियर वन एओर्टा, एओर्टिक वाल्व इज प्रेजेंट. हाउ सी,
This is atrioventricular valves. We see the left atrioventricular valve is also known as the mitral valve or bicuspid valve, and it is formed by two valvular cusp. Whether the right atrioventricular valve, also known as tricuspid valve, and it is formed by three cusps. Okay, so you have to remember this. Now, semilunar valves. So I can say okay, pulmonary valve and aortic valve, which are two semilunar valve, which made up of the three flaps. Both made up of three flaps. હવે એ શું કરશે? So semilunar valve open only toward the aorta and pulmonary artery and prevent the backflow of the blood into ventricles. Function of the valve પૂછશે તો એ શું કરશે? Function of the valve is it prevent the backflow of the blood. Now see the circulation. So first we see about the chambers: right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. Understand? So firstly see, हमारी बॉडी में से ब्लड जो है सब में पहले आएगा राइट एट्रियम में. ओके, सो ब्लड इज कम फ्रॉम दी सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना कवा. सुपीरियर वेना केवा શું કરશે? ઇટ કેરી બ્લડ ફ્રોમ ધી અપર પાર્ટ ઓફ ધી બોડી એન્ડ ઇન્ફીરિયર વેના કેવા કેરી બ્લડ to from the lower part of the body. Both are combined and go into the right atrium. Okay, so सभी जो भी deoxygenated blood है वो कहाँ आ गया? right atrium में से. Then right atrium contracts. Okay, then the valve which is situated between right atrium and right ventricle, that is tricuspid valve, तो वो क्या होगा? open होगा and blood go into the right ventricle. Then from right ventricle the pulmonary valve is open. Okay, so pulmonary valve is open and from pulmonary artery blood go into the lungs. So this is pulmonary artery. यहाँ से deoxygenated blood गया lungs में. lungs क्या करेगा? blood का purification करेगा. तो purification हो जाएगा. उसके बाद pulmonary vein है. pulmonary vein oxygenated blood carry करेगी lungs में से क्योंकि वो filter हो गया lungs में. Then pulmonary vein go into the left atrium. Understand? तो ये सब oxygenated blood कहाँ जाएगा? left atrium. From left atrium here one valve is present, that is mitral valve or you can say the bicuspid valve. तो वो open होगा. कब open होगा? जब left atrium का contraction होगा. Then the blood go into the left ventricle. Okay, from left ventricle here one semilunar valve is present, that is aortic valve. So from aortic valve is open and through the aorta blood go into the body. Okay, circulation में फिर finally हमारा blood वापस जाएगा. So that is oxygenated blood. Understand? So this is about the circulation of the heart. Let's discuss again. Okay, this is diagram, that is right atrium, okay, left atrium, right ventricle, left ventricle. Here one valve is present, that is tricuspid valve. Here is present, that is mitral valve. Understand? Now we discuss about the normal heart circulation. Okay, so just easy. First is blood come from the superior vena cava and inferior vena cava. कहाँ से आएगा? superior में से आएगा, upper part of the body में से, and inferior vena cava lower part of the body में से blood आएगा. Blood go into the right atrium. Then tricuspid valve is open, so blood go in right ventricle. Then pulmonary valve is present, that open and through the pulmonary artery blood go into the lungs. ओके, लंग्स में क्या होगा? प्योरिफिकेशन होगा ब्लड का, बिकॉज द ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड. सो लंग्स ऑक्सीजनेट दैट ब्लड एंड देन फ्रॉम लंग्स पल्मोनरी वेन कैरी कर से ब्लड में एंड देन गो इन टू द लेफ्ट एट्रियम. फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम bicuspid valve is open and blood go into the left ventricle. From left ventricle to aortic valve, aorta carry blood and the blood finally go into the our circulation. All parts of the body carry the oxygenated blood. So this is about the normal circulation of the heart. Thank you.